welcome to another episode of Robin's Humble Opinion. India, after losing to West Indies in West Indies, bounced back and they won the Asia Cup, sealed the Australia series, and now leading into the World Cup as the number one ODI side, turning things around at the right time. And I suspect ये एक पर्पल पैच की शुरुआत है. I have a feeling when you look at things that are going on around the side and the results that the team's been delivering, I have a feeling that this is a very they're in the start of possibly a purple patch, and I think it's very good news for the Indian team, and I think for all Indian fans all around the world. क्योंकि वर्ल्ड कप में जब जा रहे हो ऐसे वाले कॉन्फिडेंस जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेके जाना आगे वर्ल्ड कप की टीम में तो if you have to look at a few things leading into the World Cup, one would be Shubman Gill's form. उसका form इतना बेहतरीन है. You want to protect that a little bit क्योंकि you want to make sure कि you save all those runs for an important tournament like the World Cup. And all signs lead to Shubman Gill being the next big thing in Indian cricket. It certainly seems like वो विराट कोहली से टेक ओवर करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली एज फार एज द नेक्स्ट बिग इंडियन बैटिंग स्टार इज कंसर्न. जिस तरीके से वो बैट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बॉल को मिडिल कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, it's just phenomenal to watch. And just the form he's in, you want him to go from strength to strength. You want him to succeed. You want him to do well. And here's hoping that he continues his good form and goes into the World Cup feeling exceptionally good. And score runs and score lots and lots of runs for India. Hopefully sets high standards for himself. Or शायद मैन ऑफ द सीरीज बन जाए इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में, and wins the World Cup for India in that sense. It'll be amazing. Then we can talk about Rohit Sharma and Virat Kohli, दोनों जो बहुत ही बेहतरीन टच में हैं. They're batting really well. I love the fact that Rohit अपने जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट जो है वनडे क्रिकेट का, उसके हिसाब से खेल रहे हैं. वो थोड़ा अपना टाइम ले रहे हैं इनिशियली, उसके बाद वो पॉजिटिवली खेल रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं, प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल. विराट कोहली, man, there's not much left to say. The master is doing what he does well, and that he does best, in fact. And it's just good to see that he's gotten a break. He's fresh, and he's coming into play in the last ODI against Australia, and then he'll go straight into the World Cup, and we can hope for very good things from him moving forward. Shreyas Iyer, what a relief! As in, it's been a long time coming. We've always known he's a high-class player. In my books, I think he's someone who can go on to lead India as well in the future. Shreyas is a solid player, and he showed us why in that 100 against Australia in Indore. Just the pace at which he batted, the control, the conviction, to have a couple of low scores and have a freak kind of a spasm that keeps him out of action for some time. To come back like that, especially after an injury, is not easy. Takes a lot of character, and वो self belief जो है उसने दिखाया अपने आप में कि मेरे में वो स्टफ है और मैं परफॉर्म करूंगा इंडिया के लिए जब मौका मिलेगा. At number 3, when the opportunity came, scored a lot of runs, and so did KL Rahul. KL Rahul has been in some sublime touch since the start of the Asia Cup when he joined the team. Hundreds and then 30s, 40s, 50s, now back-to-back 50s against Australia. He looks dangerous and he looks so good. जब KL Rahul ऐसे बैट करते हैं तो बहुत मजा आता है यार देखने को. And वो भी नहीं, जब वो कप्तानी कर रहे हैं ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, वो that is something that मेरे लिए स्टैंड आउट करता है. क्योंकि जब बंदा ऐसे फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं और कप्तानी भी अच्छा कर रहे हैं तो इट ऑगर्स वेल नॉट जस्ट फॉर हिम बट आल्सो फॉर द इंडियन टीम. एंड हमें हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता था कि यार जब वो कप्तान बन जाता है थोड़ा रन स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ा वो अपने दिमाग में रह जाता है बहुत ज्यादा. पर इस केएल राहुल में जो हम देख रहे हैं वो चीज दिखी नहीं है कि फ्रीली खेल रहे हैं अभी पर अपने दिमाग में नहीं है. Not overthinking stuff, and बहुत calmly वो decisions ले रहे हैं, which is great to see. And Surya Kumar Yadav, बंदा तो जब फॉर्म में है सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है. 320 का स्कोर 390 400 तक लेके जा सकता है, वैसे वाला प्लेयर है. And I think that's the X factor that Rohit Sharma and Rahul Dravid see, and which is why they wanted to back him. And जब
एक 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 प्लेयर को बैकिंग मिलती है और वो हाई क्वालिटी प्लेयर है, वो हमेशा परफॉर्मेंसेस निकालता है। और स्काई हैज प्रूवन जस्ट दैट कि वो हाई क्वालिटी प्लेयर है और वो परफॉर्मेंसेस निकालेगा, और जब शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्ल्ड कप में तो जरूर परफॉर्म करेगा। डेफिनेटली एक सिलेक्शन की हेडेक हो गई है यहाँ पे इंडियन टीम के लिए, कि फाइनलाइज करने के लिए कि यार बैटिंग लाइनअप क्या होने वाला है। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी प्लस है, क्योंकि द फैक्ट दैट एवरीवन इन योर बैटिंग ऑर्डर आर इन वेरी गुड फॉर्म जस्ट स्पीक्स सो वेल फॉर द टीम। आई एम रियली हैप्पी कि ये सारे बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और अच्छा खेल रहे हैं। एंड व्हेन दे गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, सारे बैटर्स फॉर्म के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और एक और हेडेक अगर आप कह सकते हो जो इंडियन थिंक टैंक के लिए होगी, तो वो है अश्विन। अभी अश्विन का एक्सपीरियंस और उसका चांस मिलना वर्ल्ड कप में और ज्यादा बढ़ गया है। अभी वी डोंट नो कि अक्षर पटेल का हेल्थ का सिचुएशन क्या है, अगर वो फिट हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक, और अगर वो नहीं रहेंगे, क्या अश्विन खेलेंगे या वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। बट द लुक्स by the looks of it, it certainly seems like Ashwin will be the number one pick if India miss out Akshar Patel, and Ashwin will make that World Cup side. And with his experience in India, he's going to be a very dangerous bowler. And I think the fact that initially वो select नहीं हुआ था, the fact that he's gotten an opportunity, outside chance बोलते हैं इसको, and ऐसे वाले players हैं जो obviously high quality players हैं, जो ऐसे ऐसे मौकों में ना they bring out their best performances, and we saw Ashwin in the 3 wickets in the last game, did it especially well. From not being selected in the World Cup squad to deceiving batters in the Australian series, Ashwin has done exceptionally well. Just the way he bowled with to say David Warner, क्योंकि इंदौर में ना काफी बहुत छोटा ग्राउंड है, इसलिए बताया था कि यार इंदौर में बहुत रन बनेंगे, क्योंकि विकेट भी पाटा होता है और छोटा भी है और अच्छा बाउंस भी मिलता है वहां पे, तो यू नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्राउंड वेयर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प नहीं होगी। But even in that situation, to be able to get 3 wickets just the way he got, David Warner तो in fact review नहीं लिए थे, पर the way he got Manas Labuschagne out, beautiful delivery, आगे वाला बॉल था पीछे खेल गया, पर फिर भी वो डिसीव करना आसान नहीं है एक हाई क्वालिटी बैटर्स को। क्लोज कॉल रहेगा बिटवीन अक्षर कुलदीप, क्योंकि जडेजा ऑलरेडी इन है नंबर 7 पे, वो फिक्स्ड परमानेंट फिक्सचर रहेंगे अभी वनडे टीम का। सो लेट्स सी, it'll be interesting to see कि क्या होने वाला है as far as Ashwin and Akshar are concerned. कुलदीप यादव मेरे हिसाब से सरप्राइज करेंगे बहुत सारे बैटर्स को इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि the way he's been bowling, love it, just love the way he's bowling, love the control, love the attitude, love the hunger. वो जो हंगर है इस बंदे में ना, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, एंड हमेशा रही है, एंड वो जस्ट मौके के लिए वेट कर रहा था और अभी मौका मिल गया और वो ग्रैब करके अभी सीमेंट कर लिया अपना पोजीशन वनडे टीम में, एंड आई थिंक ही विल बी एक्सेप्शनली इफेक्टिव इस वर्ल्ड कप में। शार्दुल ठाकुर, वो शायद एक कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि विकेट जरूर निकालते हैं, हाई क्वालिटी बॉलर हैं, पर रन्स देते हैं, काफी एक्सपेंसिव रहते हैं। So that's something that he will have to pay attention to not be as expensive and probably be as effective, क्योंकि very effective bowler he is, and someone who's always going to take wickets. But when he doesn't take wickets, he ends up looking a little expensive. Doesn't look great on the scorecard. So it's something that he will have to work on. I'm certain that the team knows this about Shardul. He's what we call, in CSK we used to fondly call him the golden arm, because every time he wanted a wicket, he'd get us a breakthrough. So I'm certain that वो यही रोल निभाएंगे इंडियन टीम के लिए, कि जब भी विकेट चाहिए होगा तो वो आके बंदा विकेट निकालेगा। शमी, बुमराह, सिराज, यार इन तीनों के बारे में क्या बोलना है। दे लुक इन सुप्रीम फॉर्म, और इसके वजह से द इंडियन थिंक टैंक हैव plenty of decisions to make. They have a lot of decisions to make. It's not going to be easy, but I'm certain that the Indian team will come up with good plans. Australia पिछले 5 वनडे मैचेस सारे हारे हैं, especially after being 2-0 up against South Africa, सीरीज हार गए, फिर उसके बाद came to India, first 2 matches they have lost. शायद इस मैच में we'll see Stark and Maxwell in game 3. If so, then the trio of Pat Cummins, Josh Hazelwood or Mitchell Stark
तीनों खेलने को देखने को मिलेगा इस मैच में, एंड आई थिंक दैट विल बी very good for the Australian side, and I think it'll be some really good practice for the Indian team as well. क्या इंडियन ये तीनों को साथ में खेलेंगे इंडिया के खिलाफ? शायद हाँ, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिस चाहिए इंडियन कंडीशंस में एक वर्ल्ड कप के पहले. तो आई हैव अ फीलिंग कि they will play these three players in this game. मैक्सवेल इज कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी. जुलाई से वो मैच नहीं खेले हैं, तो जरूर खेलेंगे. ही नीड्स, हालांकि वो विक्टोरिया में एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच खेला था और ही बैटेड एंड ही बोल्ड अ बिट, सो वील हैव टू सी कि वो कैसे खेलेंगे और रिकवर कैसे होते हैं. प्रोबेबल 11 कल के लिए, क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर नहीं है, और शमी नहीं है, तीनों को ब्रेक है, तो बुमराह सिराज जरूर खेलेंगे. कुलदीप यादव भी होंगे, अश्विन भी होंगे, रविंद्र जडेजा नंबर 7. बैटर्स होंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव. It looks like again a solid side. ईशान किशन को एक 50, 60, 70, 80, 100 अगर मिल जाता है तो वो भी बहुत खुश रहेगा जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे इंटरनल कंपटीशन रहेगी either between श्रेयस अय्यर एंड आई थिंक इट्स गोना बी between श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन. मुझे लगता है कि इस मैच में कौन ज्यादा रन बनाएगा वो स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड कप में इन दोनों के बीच में, क्योंकि बाकी का पोजीशंस तो सेट लग रहे हैं ना. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श होंगे डेविड वार्नर के साथ, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुस्काग्ने, एलेक्स केरी, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉइनिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जैम्पर और जॉश हेजलवुड. इंटरेस्टिंग मैच रहेगी. राजकोट में है ये मैच, और सबको पता है कि राजकोट में बहुत रन बनते हैं, तो जरूर लगता है कि ये भी एक हाई स्कोरिंग गेम रहेगी. और आई थिंक यू कैन बी श्योर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, Shreyas Iyer, and Ishan Kishan will be looking forward to batting here and scoring a lot of runs. And they will try to make the most of it. और outfield भी बहुत तेज है, तो कल भी रनों की बरसात होगी. And I think the fantasy players can be ready for a high scoring game. So that's it on this episode of Robin's Humble Opinion. अगली बार मिलेंगे. Subscribe करना मत भूलिए, and take care, and I'll see you in the next one. Bye.